Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive session. This is going to be one great session because this is exactly what I do almost every weekend for my 1 year Trader and Me students who are part of this long journey of becoming a trader. Now, what is this called about? Mastermind. Mastermind मतलब क्या कि हम पूरे मार्केट का मतलब ऊपर से नीचे आजू से बाजू सब जगह से एनालिसिस करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है और क्या ट्रेड करना चाहिए, राइट. सो वील बी डूइंग टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि पहले मार्केट, सेक्टर और स्टॉक, कौन सा मार्केट क्या कर रहा है, कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है और फिर स्टॉक क्या कर रहा है, और उसके अंदर फिर और टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा टॉप डाउन अप्रोच होगा मंथली, वीकली एंड डेली. सो ऑल दिस थ्री टुगेदर मेक्स इट अ डेडली कॉम्बिनेशन. और याद रखो कि ये सारा एनालिसिस करने के बाद, ये सारा मास्टरमाइंड करने के बाद, ये सारा डिटेल में सब चार्ट्स को देखने के बाद भी स्टॉप लॉस हो सकता है, बाद में भी लॉस आपका ट्रिगर, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आप गलत हो सकते हो. बट वी स्टिल हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. स्टॉप लॉस भी हो गया तो उसका अलग फंडा है. इफ यू गेट स्टॉप्ड आउट, you have the risk management, you have to control your risk per day, per week, per month, per trade, per portfolio. And if you do that, then that's the right process. So पहले हमको सही तरह से एनालिसिस करना है. सही तरह से एनालिसिस करने के लिए सही तरह का टूल्स चाहिए, और हमारे टूल्स जो हमको मालूम है, RSI, बॉलिंजर बैंड, कैंडलस्टिक, RSI, ADX और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सही तरह का टूल्स और टेक्निक्स है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग सिस्टम, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम, वॉलेटिलिटी बेस्ड सिस्टम, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम. और ये हो गया पहले टूल्स, फिर ट्रेड, फिर रिस्क, पर ट्रेड, पर रिस्क, पर मंथ, पर पोर्टफोलियो, पर सिस्टम, एंड लास्ट में इमोशंस जो you have to control, which is the mind management, which is hope, greed, fear, then impulse, panic, anxiety, anxiousness, discipline, confidence. All these are part of the whole thing. This all four things makes you a professional or a perfect trader, right? So let's start with the session today. Thank you for joining from all over India. And instead of doing it only with my Zoom students, which is my 1 year student, this time I'm doing it on YouTube and Facebook, so everybody can learn and see how this thing works, right? And make sure you share this video with as many people so that more people can join and learn on this Sunday afternoon. Every Sunday or Saturday you should do this as a ritual, And thank you for joining ABCT. I know many of you have joined. It's just 5 days to go. India's largest trading event, largest virtual trading event is happening in next 5 days. The tickets are available in 3 categories. You can go and check that out. And we'll talk about that later. Let's jump into the system. So let's start with the screen share. Yes, thank you so much from joining from all over India. Welcome to this mastermind session exclusive. Now let's start with this one. So what we call this is mastermind. We'll go through the whole sector. Now look at this. Sorry. This is the weekly, daily and hourly chart of Nifty. Okay. So what is Nifty on the weekly saying? There is a kind of shooting star pattern on that, which is not so great. There is a record session count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then there is an hourly chart, which gives me some kind of a bearish pattern as well as a bearish volume. That is very surprising on Friday. So that could be an alert sign for the upcoming retracement or the correction, what we can say. Hourly at 40. So as of now, आज के दिन में अगर weekly above 60. Now monthly we are not looking at right now because we are looking for the short term, like the next week. Monthly is also above 60. Weekly is also above 60. Daily is also above 60. And hourly is at 40. So as per that, actually fits into grandfather, father, son to buy. But once we cross this hourly 40, then we confirm that अभी ये retracement शुरू हो गया है
और जो कैंडल पैटर्न्स वीकली पे और डेली पे है are not that great. Or even on hourly there is a double M or a double top pattern which shows that there would be some kind of consolidation to retracement possible in the next coming week, right? So Nifty is kind of in a cautious environment, kind of an alert environment. So we need to be very cautious with our bulls or with our longs. Now we do the sector analysis. Now look at the bank Nifty. ये और भी थोड़ा सा अलर्ट ज्यादा है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे है. If you see that 32,600 and that's where we get a spinning top kind of a formation. So that's not a great news. On the daily, we have 3 bearish candles, spinning top, doji, and kind of a bearish candle confirmation. All 3 are bearish. And hourly is having a range shift here, double top. So that also sets up for an alarm. That also sets up for some kind of halt. It can go wrong. Bullish कब होगा जब high cross हो जाएगा और resistance cross हो जाएगा, then it goes all the way up. But I would be alert. I'm cautious on my longs as we are facing this kind of signals on the market right now. IT. Now IT is slightly different because वहाँ पे आप it's walking on the bands on the weekly. On the daily there are some bearish patterns which is not that great, but यहाँ पे gap support है और hourly is also at 40. So there would be again some kind of consolidation, some kind of movement here also, but overall the setup is good. So I would be actually looking to buy on 60 support on daily on the IT stocks. In fact, there is a PRD also, positive reverse divergence on the daily chart, right? Now that means next week will be a very interesting and a tradable week, right? Based on what we are seeing right now. Pharma, bearish pattern on weekly, bearish patterns on daily, 60 break on daily, 40 break on hourly. Just there is a major support. If it goes down, then there could be further correction. तो सारे चार्ट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है जो लास्ट 2-4 हफ्ते से नहीं दिख रहा था. सो ये चीज हमको अलर्ट करता है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है. We will be alert for that, right? Again, on metal, weekly bearish pattern, not that big one. Then our daily, there is a PRD here on the daily chart and small bearish patterns. Hourly around 40, gap support on that. So that also suggests that there could be some kind of a halt. ये hourly 42 था. मतलब in short, if you look at कि जितने भी stocks, जितने भी बड़े sector है, उनका अगर hourly damage होता है, पहले कभी भी कोई भी मार्केट क्रैश हो गया, कोई भी मार्केट नीचे जाएगा, तो पहला कौन सा चार्ट बिगड़ेगा? पहला 1 मिनट का चार्ट बिगड़ेगा, फिर 5 मिनट का, फिर 15 मिनट का, फिर आवरली, फिर डेली, फिर वीकली, फिर मंथली. नाउ 5 मिनट थोड़ा बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम आ सकता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग के लिए. बट हम जो अगर स्विंग टू पोजिशनल करते हैं, तो अगर मुझे पहले देखना है कि आवरली कभी बिगड़ता है. इफ आवरली बिगड़ता है मतलब क्या 40 के नीचे जाएगा, that means there is some kind of correction which can set in. So that's a very simple clue for you, or simple signal for you to consider if there is a correction possible based on hourly 40 RSI. और देखा कि आपने बहुत सारे RSI hourly 40 पे है, तो मतलब मंडे ट्यूसडे को या तो ब्रेक हो जाएगा या तो सपोर्ट लेगा तो it continues in that zone, it continues in that uptrend. But if it breaks, then there is a major signal which says that now the halt is finally here. Now look at auto. Now auto में ऐसा कुछ नहीं है. Auto में it is better. So we can say that auto is outperforming Nifty. Auto is outperforming Bank Nifty. So that is a different sector. That's a different way of trading. It's walking on the bands. Weekly पे कोई tension नहीं दिख रहा है. Daily पे भी कोई खास tension नहीं है. Hourly is also not near hourly 40, but hourly 60 के नजदीक है. There's a good consolidation on hourly in the last 2-3 days. So वो breakout होगा तो वहाँ पे और continuation हो सकता है. So auto definitely goes in my bullish sector list. Energy is slightly concerned because weekly पे spinning top, daily पे bearish engulfing, hourly पे 40. Now see that again, this is also hourly 40. Now ये make or break situation हो जाएगा, और जो हिसाब से गिरा है hourly में, that shows that it can go down further in the next coming days. So I would definitely be alert if I'm long on any of these stocks on energy in the coming days. FMCG is
not as bad as other stocks or not as concerned. That's weekly is spinning top, daily is 60 support, hourly sideways. It's more of a sideways kind of a thing, flattish market, right? Then financial services. This also same, weekly above 60 bearish pattern, daily at 60, near 60 positive reverse divergence PRD, and hourly 40. So again, make or break for this thing. So at the same time, अगर market Monday को positive खुलता है और positive direction में जाता है first 1 hour में, that means we have so many things to buy because many of them are at hourly 40 also. That's grandfather, father, son. Now in this case, the grandfather would be weekly, father would be daily, and son would be 40. Son would be hourly chart, right? Now let's look at other stock. Realty. Realty is a spinning top, or what you can say shooting star. There's daily not much bearish, hourly again at 40. Same situation sab mein chal raha hai. So that's very, very interesting on the charts, and that can signal us good trending market in the coming week as soon as we break 40 or hold 40. That's PSU Bank. That's a different thing now. It looks very bullish. अभी PSU बैंक का तो हम लोग बहुत टाइम से हिसाब किताब रख रहे हैं, लास्ट 2-3 महीने से. Since October we have been tracking PSU banks. If you are following me, PNB, since Diwali we were PNB, Bank of Baroda, Canara Bank, RBL Bank. All these stocks are doing well. So that still looks good. Our weekly above the resistance, bullish candle, daily above this change in polarity, and also hourly at a moving average or lower band support. That's not exactly as bearish. So PSU banks are much better than many other things, like auto and PSU banks are better than other things, right? Now let's look at stocks to watch for. Now stocks, are you guys, मैं एक बार बीच में ब्रेक लेके चेक कर लेता हूँ कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं. Can you guys hear me? All of you can listen to me and see me what I'm doing with the analysis. Are you guys learning from this? All right. So what did you learn so far? Superb. Thank you. Yes. आज तो संडे है इसलिए तो कर रहे हैं. All check. Sector wise analysis. Nifty and indices. Yes. Sector analysis. Concentrate. The process, a big thing to learn. I learned analysis, Nifty, ABCD. Oh wow, ABCD कहाँ से आ गया? हाँ, fine. Thank you so much. Lupin, बात करेंगे. Excellent knowledge. Thank you so much. चलो, let's go back and just go to the screen share. Yes, so now we were looking at PSU बैंक. सब सेक्टर्स को चेक कर लिया. आई थिंक और भी कुछ सेक्टर्स है, आप चेक कर सकते हो. एकदम डिटेल में करना है तो ये मैं पूरा आपको एक स्केलेटन दे रहा हूँ. ये आपको मैं एक पूरा काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, राइट? रिमेंबर, एक चीज जो मैंने अपने कोचेस और गुरुज से सीखी है, और वो है फ्रेमवर्क. व्हाट डू यू मीन बाय अ फ्रेमवर्क? कि फ्रेमवर्क होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने को, या एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने को, यू नीड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. सो अगर मुझे ट्रेड करना है तो पहले स्टॉक सिलेक्ट करना है, फिर उसका एंट्री एग्जिट सिलेक्ट करना है, फिर उसका रिस्क मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है, फिर उसका एग्जीक्यूशन करना है, और फिर मैं अपना माइंड कंट्रोल में रखूंगा इमोशंस को, तो मैं प्रॉपर ट्रेडिंग कर पाऊंगा. सो दैट्स द फ्रेमवर्क, राइट? RSI सीखना है, पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर उसका रेंज शिफ्ट, फिर रिवर्स डाइवर्जेंस, बेसिक डाइवर्जेंस, सब
दैट्स अ फ्रेमवर्क. एवरीवेयर इफ यू डोंट हैव अ फ्रेमवर्क, जब जहां पे फ्रेमवर्क नहीं होता है वहां पे रैंडमनेस होता है. रैंडमनेस मतलब कुछ भी जो मन में आया वो किया. कभी मेरे को ये लग रहा है, कभी वो लग रहा है, कभी वो दिख रहा है, कभी टीवी देख रहे हो, कभी न्यूज चैनल, कभी कभी गट फीलिंग, कभी फ्रेंड ने बोला तो, कभी 200, कभी 500, कभी 1000, कभी ऑप्शन, कभी फ्यूचर. दैट्स नॉट फ्रेमवर्क, दैट्स रैंडम. रैंडम से कुछ भी पता नहीं चलेगा. प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते. जब फ्रेमवर्क होगा तो फ्रेमवर्क को ठीक कर सकते हैं, फ्रेमवर्क को इंप्रूव कर सकते हैं, फ्रेमवर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रेमवर्क से सीख सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है. Right, so make sure you have the framework. Anything which you want to achieve in life needs to have a framework. Right, so let's talk with IT sector, ITC, sorry, FMCG sector. यहाँ पे कुछ अच्छा breakout दिख रहा है. You can look at that weekly chart, crossing that W pattern with good green candle, good volume. Daily also crossing 60 with good volumes on the daily in the last few days, and hourly is just above this resistance. अब ये रेजिस्टेंस आवरली पे क्रॉस दिख रहा है, लेकिन डेली पे इफ यू सी देयर इज स्टिल अ रेजिस्टेंस व्हिच इज अराउंड 218 220. जैसे ही 220 क्रॉस होगा, आई थिंक देयर इज अ गुड पोटेंशियल टू गो अप टू 240 245. सो दैट कुड बी वन स्टॉक व्हिच आई वुड लाइक टू ट्रैक. इसमें ऑप्शंस भी लिक्विड है, तो यू कैन ट्रैक इट अकॉर्डिंगली. देन वी लुक एट आरबीएल बैंक व्हिच इज, जैसे वो पीएसयू बैंक सेक्टर वाज गुड, सो आरबीएल बैंक वी कैन लुक एट इज on the daily, sorry, on the weekly you have above 60 cross, which is a good sign. RBL बैंक हमने बहुत बार एनालिसिस किया है पिछले कुछ वीडियो में, और उसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 240 45 पे, वो उसने क्रॉस करके अभी वो डेली पे सपोर्ट ले रहा है. 60 सपोर्ट है, आवरली 40 सपोर्ट है. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर द ग्रैंडफादर फादर सन, विच इज वीकली, डेली एंड आवरली फॉर द कमिंग वीक. अगर बैंक्स पॉजिटिव हुए या मार्केट पॉजिटिव हुआ, सो आरबीएल बैंक आई थिंक वुड बी अ ग्रेट पिक. ना ये जो भी है आप लिख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मंडे जाके सब खरीदना है. ये कंफर्म होना चाहिए, उसके साथ सेक्टर सपोर्ट होना चाहिए, मार्केट सपोर्ट होना. हमने पहले मार्केट को देखा, फिर सेक्टर को देखा, फिर स्टॉक को देख रहे. तो मार्केट इज 40%, सेक्टर इज 40% एंड स्टॉक इज 20%. मतलब अगर खाली स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट और सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग विथ लेस प्रोबेबिलिटी. पैसा बन सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है. राइट, अगर मार्केट भी बुलिश है, सेक्टर भी बुलिश है और स्टॉक खरीद रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग विद द बिगर वेव, देन द चांसेस ऑफ मेकिंग मनी गोज हायर. राइट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एचडीएफसी लाइफ एकदम सिमिलर चार्ट दिख रहा है आरबीएल बैंक जैसा, तो दोनों का सेटअप परफेक्ट है मंडे के लिए. इफ वी गेट अ गुड सपोर्ट देयर, वी कैन इवन थिंक अबाउट गेटिंग इनटू एनी ऑफ दी स्टॉक. अगर दोनों सेम दिख रहे हैं तो कोई भी एक को ट्रेड कर सकते हैं. Now, private banks में you have weekly, monthly is above 60, weekly is having a PRD, and that's a nice PRD. अच्छा PRD है. अच्छा और खराब PRD आपने अभी, मैं यहाँ पे वो डिटेल में सिखाने का मुझे उतना टाइम या बैंडविथ नहीं है, लेकिन जो if 1 year students, if you are watching, you know what it is in that session which you learned, what is a good or a perfect PRD. So you can see that it's a good PRD. Daily is at 40 support, which is also good, एंड आवरली में छोटे छोटे डाइवर्जेंस है. सो अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ और प्राइवेट बैंक्स में अगर चुनना है किसी को, तो मैं कोटक बैंक को चुनूंगा, बिकॉज दैट्स अ गुड स्टॉक एज पर द एनालिसिस. राइट, और नीचे जाएगा अगर जा सकता है तो एक आध वीक फिर भी वो पीआरडी मेंटेन हो सकता है. और फिर जब, मतलब बेसिकली यू डोंट वांट टू ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन, यू जस्ट कीपिंग इट ऑन ट्रैक. राइट, देन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड. नाउ in this case I would not be very enthusiastic about this compared to what I have in Kotak, because यहाँ पे सबसे बड़ा concern is this bearish engulfing pattern, which is not a good sign. That's a perfect like an evening star also, और यहाँ पे shooting star है. So अभी मेरे पास HDFC Limited है, Kotak है, RBL है, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फिल्टर कैसे कर रहे हो. मैं सब तो नहीं ले सकता हूँ, सब लेने के मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसा भी नहीं है, और मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास उतना फोकस भी नहीं है कि मैं इतने सारे स्टॉक्स को हैंडल कर सकूं. तो मुझे उसको फिल्टर करके बेस्ट पे जाना है. अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब फिल्टर करते हो, तो मैंने फिल्टर करके कोटक को सिलेक्ट किया, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एचडीएफसी बैंक चल गया या एचडीएफसी लिमिटेड चल गया, दैट्स पॉसिबल, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गेम, एंड दैट्स अगेन पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो आई विल नॉट
वो पहले कभी अरे वो लेना चाहिए था, अरे ये क्यों नहीं लिया मैंने, अरे ये तो देखा ही नहीं मैंने. डोंट डू दैट सेल्फ क्रिटिसिज्म. इससे ये बाद में पछताने से अच्छा है कि जैसे ये सैटरडे संडे को डिटेल में एनालिसिस कर लिया, हाँ मैंने सब देख लिया, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम सब चेक कर लिया है, उसके हिसाब से कोटक बेटर है, एचडीएफसी नहीं है, तो फिर मैं कोटक के साथ जाऊंगा. और फिर भी एचडीएफसी चल गया तो देन आई विल से ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, नॉट टू बी लाइक अरे वो लेना चाहिए था, राइट. So that's where people falter many times. Bajaj Finance, a strong trend on weekly, but bearish patterns on in the last 2-3 weeks. थोड़ा सा halt है. Daily near 40, 40 से थोड़ा ऊपर है, मतलब वहां पे और थोड़ा नीचे आने का जगह है. But hourly is very good support. So this could be a good pick for Monday if we get a positive opening. If we get a positive opening and a follow through. इफ बोला है, मैंने बोला, नहीं तो काफी लोग खाली नाम सुनते हैं मंडे को बाय करना, सीधा बाय कर लेंगे, नीचे जाएगा, फिर मेरे को कमेंट में नेगेटिव कमेंट देंगे, अरे ये तो नीचे गया, राइट. सो दैट्स द वे इट वर्क्स. कैनरा बैंक, सो पीएसयू बैंक में है, और पीएसयू बैंक का सेक्टर एनालिसिस हमने किया और वो अच्छा दिख रहा है, वो हिसाब से ये दिस वुड बी अ गुड पिक फॉर वीकली, डेली and hourly. Grandfather, father and son. By the way, those who don't know what is grandfather, father, son, you just Google up RSI videos by Vishal Malkan on YouTube and you will get at least 10-20 of them where I have explained grandfather, father, son strategy in detail in many videos, and not only my channel, but I have done videos for other channels also. There also you can find them. Or if you buy the book hashtag hashtag, I think there also we have explained a bit. Of course उसके बहुत variations है, उसके अंदर और deep में जा सकते हैं, उसको 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार में रेट कर सकते हैं, उसमें भी बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कौन सा है वो भी कर सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज लॉट, इट्स like going deeper into one strategy than going broader into many tools and techniques, which I again keep repeating in some of the sessions. Bhel, now this is where I am personally interested in the stock. If you look at weekly, थोड़ा resistance पे है, वो 40-42 के ऊपर गया ना, उसके बाद उसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है. But if you want to buy with a low risk as of now, because it is at daily 60, hourly 40, so it's a very low risk, 35-40 paise, yeah, almost like 75 paise ka stop loss say, this would be a very good positional pick, not a daily or a weekly pick. It's a positional pick, which I am personally also holding on this one, right. Titan, that's the weekly PRD, daily some kind of correction, and hourly near 40. So I'm not personally interested because जब तक daily 40 पे नहीं आता है, मतलब there could be another 2-3 days of decline, और support भी थोड़ा दूर है, मतलब एक दो red candle और आ सकते हैं जिससे ये 40 पे आएगा, जिससे ये support पे आएगा, then I will be seeing in the future, right. Asian Paint, now that very big red candle, what does it say with the big volume? Loud move, halt, stop, some problem, right. So we will check that, we will avoid that. Maybe थोड़ा सा इतना बड़ा आवरली में डाउन ट्रेंड के बाद एक बाउंस आ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इट कैन बी अ गुड पोजीशन. जानबूझ के इसको इधर डाला है ताकि यू अंडरस्टैंड डिफरेंट, ऑल स्टॉक्स आर बुलिश, बट हाउ डू यू सिलेक्ट अ बेटर वन. ये भी बुलिश दिख रहा है ओवरऑल, बट इसमें जो कैंडल हुआ वीकली पे और डेली पे, उसके बेसिस पे वी हैव टू से दैट ओके दिस इज नॉट द बेस्ट, राइट. ये हमने डिटेल एनालिसिस किया आज का ऑन द वीकेंड. इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ये तो मैंने 10-12 स्टॉक्स को देखा, आप जाके देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स है, हजारों स्टॉक्स है. लेकिन एक आप, मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो उसका एक बास्केट बना के रखो. बास्केट मीन्स व्हाट, यू हैव लाइक 20-25 स्टॉक का बास्केट है, उसी को बार बार ट्रैक करो, ट्रेड करो, एनालाइज करो, तो वो आपको आसानी से पकड़ में आ सकते हैं. क्योंकि हर बार नए स्टॉक देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. जैसे हम एक, हमारे कुछ फ्रेंड्स है, हमारे कुछ दोस्त है, हमको बार बार मिलते हैं, सालों से जानते हैं, तो उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे क्या बिहेव करेगा आगे जाके. कोई नया स्ट्रेंजर आदमी आ जाएगा तो उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. सो नो द स्टॉक वेल विच यू आर ट्रेडिंग, कीप ट्रैकिंग देम. अगर कोई भी स्टॉक में मेरे को बड़ा पोजीशन लेना है तो मैं पहले उसको एक आध महीने से पहले से उसको ट्रैक करना, ट्रेड करना, देखना शुरू कर देता हूँ. उसका चार्ट रोज क्या है, उसका कैसा मूवमेंट है, कैसा वॉल्यूम होता है, कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करता हूँ. क्योंकि जब तक उसका नेचर एज अ कैरेक्टर यू डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक, यू कांट ट्रेड देम well in the market. Now let's look at this one. Last stock for today on this mastermind is that we're looking at DLF.
DLF सालों के बाद मतलब बहुत एक ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद ये लेवल पे आया है, जो 280 का है। अब मुझे लगता है 280 से ज्यादा अभी साइकोलॉजिकल लेवल 300 का है, 300 के ऊपर निकल गया, दैट्स अ नाइस लाइक अ 10-12 year consolidation, and this is a nice up move, and this is a nice volume on the last month. At least this month is still on, ये वाला महीना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, so there is a possibility of a good breakout, so this can go into a positional move. पहली बार 60 को क्रॉस कर रहा है, एक बार पहले किया फेल हो गया, दूसरी बार फिर से फेल हो गया, अब ये लेवल भी क्रॉस हो रहा है और ये RSI का लेवल भी क्रॉस हो जाए, so that could be one good pick for the positional trade coming up in the next few weeks or few months maybe. तो ये कल का कल खरीदने ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन you have to keep that. Remember एक thing, एक चीज ध्यान में रखो, जब तक आप positional trade, one thing, write down if you want to write down, जब तक आप positional trade और trend following नहीं करोगे तब तक बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आप कितना भी दिन में ऑप्शन वाला ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, एक्सपायरी स्पेशल करोगे, उसमें लाखों में 1-2% लोग वो बड़ा ट्रेड जो करोड़ों का है या लाखों का है बन जाएगा और वो कैपिटल आपका बड़ा हो जाएगा, वरना वही 20-25-50 हजार लाख रुपए में ऊपर नीचे करते रहोगे, और वो गोल गोल घूमना, उसके लिए मेहनत भी बहुत करना पड़ता है, उसके लिए रोज बैठना पड़ता है, उसके लिए रोज ट्रेड करना पड़ता है और दिमाग को चलाना पड़ता है। बट व्हेन यू हैव वन गुड पोजिशनल ट्रेड, आपने मेरे पिछले कुछ पोजिशनल ट्रेड देखे थे जब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और RBL बैंक में ट्रेड किया था, सो दैट इज वेयर यू मेक बिग मनी प्लस यू आर फ्री, यू डोंट हैव दैट। और बट खाली ये वीकेंड को ये सारा एनालिसिस डिटेल में करना चाहिए, एक, और दूसरा अपने आप पे और टेक्निकल एनालिसिस पे और आप जो स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर बिलीफ होना चाहिए, then it will work out well. So I strongly suggest that you should have positional or trend following systems in your trading, otherwise it will be difficult to make big money, right? Big money, otherwise normal खाना पीना खर्चा निकालना है तो डे ट्रेडिंग वो रोज का मजूरी जैसा करना पड़ता है, that's like a labor work, what you have to do every day, trade every day, make money, rather than trade only once and make money for the whole year. How's that idea, right? So I would suggest go with DLF, check out DLF like the way we are analyzing, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसा नहीं है कि खाली DLF है, बहुत सारे स्टॉक्स है। DLF का एडवांटेज है कि वो फ्यूचर में भी है तो वहां पे लेवरेज कर सकते हैं, ऑप्शन में भी है तो लिक्विड होगा तो वहां पे भी कुछ कर सकते हैं। बाकी देयर आर मेनी स्टॉक्स लाइक दिस व्हिच आर ब्रेकिंग आउट, which have broken out in the past few months and breaking out in the next few months, and that's why I suggest that 2021 is a great year to be in the market, great year to be in this structural bull market which I think has just started. छोटे छोटे करेक्शन आ सकते हैं लेकिन overall it looks very very good, and that's why we are inviting you to be part of this amazing program called ABCT. Now first of all let me check with you guys that what did you guys learn from all this, what I did for the whole almost like 30 minutes. Did you guys like that? Yes, what lesson did you learn? I shared a lot of things, which is मैंने खाली यही काम मैं हर सैटरडे संडे को करता हूँ, लेकिन मैंने इस बार खाली आपके जूम पे करने के जगह पे इधर कर दिया, यूट्यूब फेसबुक पे, ताकि सब लोग इसका फायदा या एडवांटेज ले सके, राइट? फ्रेमवर्क, टॉप डाउन अप्रोच, I can approve on my own analysis, yes. Positional trade, strong framework to need. What knowledge can't value with any price, yes. Thank you. Sector analysis. फिर भी लोग आएंगे कुछ ना कुछ तो डिसलाइक करेंगे वीडियो को, वो तो ठीक है यार. Sir, we learn so much from your side. Thank you. Positive trading makes more money. Positional trade. Thanks for choosing YouTube this time. Yes. Thank you. Focus on the process. Super. Yes. Thank you so much for the love and support. Thank you. ABCT date. अब तक आपको ABCT का डेट नहीं मालूम है? क्या बात कर रहे हो? इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और वो है जनवरी, अगले फ्राइडे सैटरडे संडे को, अगले फ्राइडे सैटरडे संडे फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 5. It's a live experience, right?
Don't miss it. Yes. Thank you so much. Now I'll just show you. अगर आप ये जो आज मैंने mastermind किया, if you are in the premier 3 तरह के टिकट्स है. प्रीमियर टिकट है तो कल मैं एक सपोर्ट सेशन करने वाला हूँ. वो है सुबह 9:15 से लेके 9:45 तक, आधे 15-20 मिनट, आधा घंटा. और फिर 2:30 1:30 आई थिंक 2 सपोर्ट सेशंस है जो प्रीमियर टिकट में है. मतलब जो मैंने एनालिसिस किया उसमें से क्या चला क्या नहीं चला, उसी को कैसे ट्रेड करना है कल सुबह, दैट विल बी डिस्कसिंग दोज हु आर इनटू प्रीमियर टिकट, राइट? एंड दोज हु आर गेटिंग द वीआईपी टिकट, they are going to get mastermind like this twice, 2 masterminds after ABCT, so that you will learn from more from that. Now if you want to check out more details, just go to theabct.com and check out the details. I'll just share the page right now with you and show you that this is where it is. If you go there, January 21st को प्री ट्रेनिंग है, 21 तारीख को थर्सडे को. मतलब एक आधे 1 घंटे का सेशन होगा जहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सेशन क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे आपको लॉग इन करना है, सब सारे डिटेल्स बता दूंगा. और 22, 23, 24 को प्रोग्राम शुरू होने वाला है. कीनोट स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जो सैटरडे को आएंगे, और गौर गोपाल दास जी संडे को आएंगे. और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे है. अब ये प्रोग्राम 6 महीने में या 8 महीने में एक बार होगा. इस बार हो रहा है 2021 का स्टार्ट विद अ बैंक, एंड दिस गोइंग टू बी अमेजिंग. ऑल 3 टिकट्स का डिटेल्स यहाँ पे लगा है, तीनों टिकट पे, और कौन सा आपको सिलेक्ट करना है दैट इज अप टू यू. नाउ वेरी फ्यू लेस टाइम लेफ्ट फॉर ऑल दिस. सबसे बड़ा जो टिकट है उसमें ऑप्शन सीक्रेट और ऑप्शन सीक्रेट्स और ऑप्शन चैलेंज भी है. सो दैट इज द 2 मास्टरमाइंड्स भी है. जैसे ये वीआईपी में 2 मास्टरमाइंड्स है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन सीक्रेट, ऑप्शन चैलेंज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग. सो व्हाटएवर टिकट यू सिलेक्ट डिपेंड्स ऑन यू. 3 टिकट्स, जस्ट गो एंड चेक आउट द डिटेल्स. सारे वीडियोस चेक कर लो यहाँ पे जो है, और एक बार डिसाइड कर लो. 4 दिन के बाद प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है. ऐसा मतलब मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. जो हिसाब से हमने स्टूडियो सेटअप करने में मेहनत की है, काम सेटअप करने में सबको इन्वाइट किया है, और बहुत बार एबीसीटी की है पिछले बहुत सालों में, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा ग्लोबल होगा, क्योंकि ग्लोबली लोग पीपल आर बाइंग टिकट्स. और उन लोग तो रात को जाग के देखेंगे, क्योंकि वहां पे तो टाइम जोन चेंज हो जाएगा. आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घर पे बैठ के सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक 3 दिन, a total complete immersive experience it's going to be. You will learn it, love it, you will share it, you will dance, you will have fun, you will change the way you look at the market, and you're going to start from the basic. मतलब आपका पूरा मार्केट देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा. And it's not only for kids, it's not only for adults, but it's also for kids and everybody, because there's a lot of fun thing happening in this event. Apart from the 3 trading systems, apart from the risk management, apart from the tools and techniques, apart from the keynote speakers, there's a lot of fun which is going to happen, right? There is a swag box which we send you at your house when you buy the ticket. अब जितना लेट टिकट बाय करोगे उतना स्वैग बॉक्स आपको टाइम पे मिलने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुरियर से आएगा. आप बॉम्बे में हो, बॉम्बे से बाहर हो, इंडिया के बाहर हो, सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट टुडे. वी विल ट्राई टू सेंड द स्वैग बॉक्स ASAP so that you can get it before ABCT. बिफोर, बाद में भी मिल ही जाएगा, लेकिन पहले मिल जाएगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, राइट? सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट टुडे. और जो प्रीमियर टिकट ले रहा है उसके लिए कल एडवांस सपोर्ट सेशंस है, सुबह 9:15 बजे और शाम को दोपहर को 1:30 बजे. सो और यू बाय वीआईपी टिकट और यू बाय एग्जीक्यूटिव टिकट, बट डोंट miss out on this major event of my life, Malkan's Views Life. And if you are a follower of Malkan, then you must attend ABCT. It's going to be life changing, not just about stock market, but about overall life, right? Thank you so much. Have a great weekend, have a great Sunday. मैंने जो एनालिसिस किया शायद चाहिए तो एक बार और देखो और फिर से ट्राई करो कि क्या बोल रहा हूं मैं. And then we will see you on the next video. Thank you so much. Good luck and good trading. Get the premier ticket and I'll see you at 9:15 tomorrow. Right. Good luck.